this is Samina Sheikh here, and with me today on Street Diaries, I have someone who needs to give me some tips for sure. But he's the handsome hunk and fighter. So join me as I welcome Akshay Oberoi on Zoom. Hi, thank you for having me. I love being on Zoom. And whenever I see him, I do feel that he's been losing tons of weight. So क्या है राज आपका? अरे कुछ राज नहीं यार, करना पड़ता है, पेट का सवाल है, करना ही पड़ता है काम के लिए. But I don't have any specific things. मैं सब खाता हूँ, but I just eat in a certain amount of hours. Like 12 और 6 के बीच में ही खाता हूँ मैं. It's like पापी पेट के लिए पापी पेट को काटना पड़ रहा है. पापी पेट को काटना पड़ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. पापी पेट के लिए. But you know, as we talk about street food diaries और street के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप street का खाना कितनी बार खाते हो? मैं अक्सर खाता हूँ. मेरी बिल्डिंग के नीचे एक गुप्ता भेलपुरी वाला है, उसका मस्त सेवपुरी बनता है. मैं अक्सर खाता हूँ यार. माय वाइफ इज अ बिग पानी पूरी फैन. स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट, स्पेशली बॉम्बे में. और आपको क्या पसंद आता है, लाइक पानी पूरी ही या यू? आई नो दैट यू हैव अ स्पेशल भेलपुरी अड्डा. यस आई डू. गुप्ता वाला. गुप्ता अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज सेवपुरी भेज देना शाम को ऊपर और फ्री में, बिकॉज आपका भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जूम पर. आई लाइक रोल्स. I like chaat. Yeah, those are my two favorite, I would say. और जो बॉम्बे का सैंडविच है ना, like the typical sandwich जो बॉम्बे में ही मिलता है, that is one of my favorites. And how much do you enjoy the tapri chai and all that, you know, local chai, अदरक इलायची वाला? Love it, love it, love it, love it. ये भी चला रहा है चाय के लिए. I love it यार. टपरी वाली चाय also वो सेट पे मिलती है. वही जो टपरी वाली चाय होती है आपको सेट्स पे मिलती है. तो even my wife, she loves it. Anytime she comes to shoot, and lot of my friends ऐसे वो यार वो सेट वाली चाय पिला दो, जो बेसिकली टपरी वाली होती है. I have to ask you this, Akshay, जब आप एक्टर नहीं थे versus when you started, like, you know, doing acting and all that, how much of your diet has changed? Oh, lots. That's a great question. Lots. I was younger also, so आप कुछ भी खा लो वो हजम हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता. I started acting very young. उस वक्त कुछ फर्क नहीं पड़ता था. एंड मैं मतलब स्टार ऐसे नहीं बना हूँ ना, तो मैं एक्टर था तो मैं खाते रहता था, करते रहता था काम. As time has gone on, the body is also slowed down and my work is increased. So now also certain roles I've been doing that have changed. तो उसके लिए I have to maintain a diet for sure. So like basically you have controlled a lot. Now you have a proper like diet to follow and all these things what you're doing, right? I do. And how is it? How is it? Absolutely outstanding. So your diet allows you to have dosa? Yes. See, basically मैं सब खाता हूँ still, but I just control the hours I eat in. So I start eating at 12. अभी थोड़ा जल्दी हो गया 15 मिनट, और मैं 6-6:30 तक पैकअप कर देता हूँ. And I don't eat anything after that. Yeah. और फाइटर के लिए आपने क्या स्पेशल डाइट फॉलो किया था? Had to ask you about it. वहीं से स्टार्ट हुआ. ऐसे फाइटर के लिए ही स्टार्ट किया था मैंने, बिकॉज वो जी सूट्स में वर्दी में सब पकड़े जाता है. So the first time I put that on, I was already fit, but I saw Sid's face and he was like, "Acha." So then I started the diet then, and it's very helpful, यार. So between 12 and 6, intermittent fasting जिसको कहा जाता है. Look, I don't advise it for everyone, and diets are not a one size fits all. You know, थोड़ा आप अपनी बॉडी पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा डाइट इस्तेमाल करना चाहिए. So I feel very scared telling people कि मैं ये करता हूँ, but I also want to warn them, don't follow it. If it feels right, then do it. अगर आप सस्टेन कर सकते हो, मैं सस्टेन कर सकता हूँ. 12 और 6 के बीच में मुझे भूख नहीं लगती उसके पहले, उसके बाद भी भूख नहीं लगती है. So it works for my body. If it doesn't work और आप थके हो, टूटे हो, मतलब दिमाग फट रहा है, don't do it. Find something that works for you. Like you walk a lot, right? Which is a very healthy, nice thing. So you can eat anything and then just walk it off. So you have to find what works for you. तो अक्षय, इसके वजह से like you know the way you have been controlling your diet because of your work and all that, how much have you let go of your party culture? I was never much of a partier. कॉलेज के बाद यार मैं बड़ा फोकस्ड आदमी रह चुका हूँ पहले से ही. Now whatever that means, but I think that's the reason I've survived in the business also. मैं ज़्यादा पार्टी नहीं करता हूँ, अपने दोस्तों के ही बीच रहता हूँ. मेरे एक आध इंडस्ट्री के दोस्त हैं, बाकी सब इंडस्ट्री के बाहर ही हैं, which is very nice. तो दिन भर एक्टिंग और फिल्मों की बात नहीं होती कि कौन सा एक्टर को क्या मिला है.
As most people know, Imran Khan is my best friend. उसने तो कब छोड़ा था, अब शायद hopefully वापस आएगा. But so we don't talk much about the business. If anything, we talk about films we like. No, and you guys also talk about one very important conversation. And my question was that day, which I missed on asking you, is about Gaadi. Like you have this fascination about making some cars and all. Tell me about this. I really want to do. Yeah. My car is somewhere around here, पता नहीं. Which But I saw right now. I was yeah, like, oh, super cool. we have a huge fascination with it. He has a Polo Volkswagen. I have. मेरी तो Honda City थी, अब तो कुछ और ही है. Yeah, we just keep designing and not only exterior but interior engine को भी हम काफी improve करते हैं. Yeah. So we have a lot of fun. We do a lot of stuff ourselves. Yeah. और एक दूसरे को ideas देते रहते हैं. मैंने कुछ किया तो वो भी सोचा कि मैं भी कर लेता हूँ. And it's been a lot of fun यार. गाड़ियाँ बहुत expensive है शहर में. So sure, we've probably spent a lot of money on our cars. But एक customize हो चुका है और like what we like in the car. ये नहीं कि सिर्फ brand name लेके घूम रहे हैं. So we're also those type of people. We're not very showy people. Yeah. We're not flashy people. तो हमें जो पसंद आता है हमको अच्छा लगता है और हम करते हैं. कितना भी छोटा हमको भाया, मन को भाया टाइप. मन को भाया टाइप. ये नहीं कि यार ब्रांड पहन के Gucci और BMW लेके घूम रहे हैं. That's just not who Imran is. That's not who I am. So we like customizing us. And that's very a Bombay trait. I must say that it's very Mumbai trait where you don't want to be flashy, but you Yeah. do what you want to do. Correct. You do what you want because you're passionate about it, not to prove to the world anything. That is a very Bombay trait. That's why I love this city. And that's why it's a long shift also for you from New Jersey to Bombay. खाने में भी काफी changes आए होंगे. So what you would prefer having there versus over here you control now? हम लोग 2 बार जाते हैं अमेरिका साल भर में. मैं कुछ मिस नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे बॉम्बे याद आता है. मैं लैंड करता हूँ न्यू जर्सी में. हालांकि मैं वहाँ पला बड़ा हूँ. मैं लैंड करता हूँ न्यू जर्सी में, मुझे बॉम्बे की याद आती है. मुझे बॉम्बे का खाना याद आता है. हम लोग न्यूयॉर्क में कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए, यू स्पेंड हाउ मेनी एवर hundreds of dollars. बट आई ऑलवेज से कि यार बॉम्बे में ज़्यादा अच्छा है चाइनीज़. यार बॉम्बे में पिज्ज़ा ज़्यादा अच्छा है यार. सो आई डोंट मिस एनीथिंग देयर. आई मिस बॉम्बे व्हेन आई लीव. एंड उसी बात है, हमें बॉम्बे का खाना खाना चाहिए थोड़ा, सो दैट वी गेट टू नो क्या है. My staff, because मैं छोटी फिल्में करता था ना एक टाइम में, तो my staff has been with me for a while. My hair and makeup guy and my spot boy. तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे शहरों में जाके शूट करते थे. तो they always felt like कहीं बाहर जाके शूट करना चाहिए सर, मजा आएगा. तो one time we got a project in Dubai. तो I said चलो भाइयों, जब मजा आएगा इंटरनेशनल शूट पे, चलो. Within 5 days of being in Dubai, the first they were like, अरे दुबई क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंग्स हैं. Within like 3 days, they both came crying कि सर चलो बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे में ही अच्छा है सब. So everyone misses this place. It's an addictive city. What is this one thing which you love about Bombay the most? Is it the nightlife or the busy schedules, which you have, which also lets you, stay still in the moment where you want to be, or it also helps your brain to just, navigate to other things and all? I think the best part about Bombay is you can get anything at any time. There's nothing you can't do in this city. You can do anything you want. And that's not this case with a lot of cities. I'll give you a small example. हम लोग न्यूयॉर्क में थे and my in-laws live there still. मेरे बच्चे की बाइक टूट गई थी. तो हम किसी साइकिल शॉप में चले गए ठीक कराने के लिए और बंदे ने कहा 3 हफ्ते बाद आओ. हम लोग 3 दिन में वापस बॉम्बे जा रहे थे. And I said like if you want to get this done in Bombay, 15 मिनट वो बाइक ठीक करके आपको सस्ते रेट में दे देता और बच्चा खेलता 3 दिन आराम से. You can get anything you want in this city. This city is magic. What is the jugaad you have done when you have been in Bombay? It could be food jugaad, it could be some other jugaad also. I think the thing you brought up earlier, the car thing. There's a lot of jugaad happening with that stuff because unfortunately a lot of it is not allowed. So you have to do it in a certain way that you don't break any rules also. So उसमें बहुत जुगाड़ लगता है. Without spilling the beans too much on that. Okay, and I have to also ask you about this because you have worked with Hrithik Roshan and you consider him as your idol. Yeah. What is that one thing you have tried choroing from his dabba, or have you tried kind of seeing कि अच्छा ये डब्बे में या खाने की कोशिश कभी की हो? मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनका डब्बा छूऊं, क्योंकि उनका डब्बे में ना ऐसे स्पेसिफिक खाना आता है. Then he knows everything is balanced. मतलब पता नहीं ग्लूटामिन, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या एकदम बैलेंस खाते हैं वो. I would never even touch it or ask.
The one thing he has shared quite often is वो कहीं से वो चॉकलेट लेके आते हैं, पता नहीं रहते कि if you're listening, पता नहीं वो कहाँ से लेके आते हो आप. It's this like sugar-free chocolate, but it doesn't taste sugar-free at all. Yeah, it's incredible. I don't know what it is. I think I really need to find this out Yeah, I need to after find this. that out. Yeah. Message you. Because मैं भी काफी चॉकलेट खाता हूँ. ऐसे कभी खाने के लिए कभी आपने कुछ डांट खाई हो बचपन में या ऐसे ऐसे कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए आपके साथ में? Funny that you say that. My father was quite a strict Yeah. person. Military जैसे आदमी है. So anytime me and my brother would be eating junk food like McDonald's or whatever, वो कभी अच्छा नहीं लगता था. और हाँ, तो ऐसे डांट खाई हम दोनों ने बेचारों. जब मेरे बड़े भाई ने और मैंने. और प्यार और खाने के बीच में चूज करना हो, आपने किसको चूज किया है? ओह, प्यार एनी डे. एंड प्यार और खाने का जो वो मिश्रण है ना लोगों के दिमाग में, दे शो देयर लव थ्रू फूड. इट्स अ वेरी वियर्ड वन. देखिए, खाओ बेटा, खाओ और खाओ. जितना मैं खा सकता हूँ उतना ही खाना चाहिए. लाइक at this, I don't get that whole thing. So for me, I would choose love any day over khana, and I would also show that please don't show your love through khana. That reminds me of something, but I'll tell that to you offline basically. But also, yeah, like Akshay, was it love marriage for you? Or so आपने आपके प्यार के लिए यानी Valentine's Day पे स्पेशली क्या क्या किया है? मैं और मेरी बीवी एक दूसरे को 16 साल की उम्र, मतलब हम लोग, मैं 16 साल का था या मैं 17 साल का था, वो 16 साल की थी. And we met in New Jersey. She was born in Jamshedpur and moved to New Jersey as a kid. Her name is Jyoti. तो पहले तो बहुत धमाकेदार चीज़ें करते थे कि वाह, look at how I took you out here to this fancy dinner in New York, और ये सब खर्चा किया, पैसे भी नहीं थे पर फिर भी खर्चा किया. देन धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि इसमें कुछ नहीं है. घर पे एक दूसरे के साथ लेट्स स्पेंड टाइम, लेट्स टॉक, लेट्स मेक ईच अदर सम फूड, लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट, द फ्यूचर, द प्रेजेंट. नाइस क्वाइट टाइम. तो अब काफी चीजें चेंज होती है ना धीरे धीरे. और आपने क्या बनाया है ज्योति के लिए? यार, मैं बड़ा हॉरिबल कुक हूँ, बट मैं पास्ता वास्ता ठीक ठाक बना लेता हूँ. तो आई थिंक वो बोर हो रही है, मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा वैलेंटाइंस डे के लिए. बट अब तक तो मैंने सिर्फ पास्ता वास्ता बनाया है. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग यू लव अबाउट हर व्हेन शी कुक्स द फूड? She makes incredible food, a very light, healthy, nice food. So she has a nice, she makes very good bhindi. She makes very good dosa, idli, sambar. And she makes very good rasam rice. And how many times you have been in trouble between choosing between your mother's cooked food versus hers? I'm sure a lot, but I haven't paid attention to it. मैं बस ईमानदारी से कह देता हूँ मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा. And they're very different. My mom is hardcore Punjabi, cooks very heavy मसालेदार खाना, spicy खाना. Jyoti is a Tamilian, a Tambram, so she makes very sada, nice soft food on the summer. So very different. So for different times and different moods, I'll call up mom and eat her food. Otherwise, Jyoti का खाना तो है ही. और जब दिल टूटता है तब आप कौन सा खाना प्रेफर करते हो? अगर दिल टूटता है तो मैं खाता ही नहीं, मैं उस टाइप का इंसान हूँ कि जब भूख ही नहीं लगती. वैसे भी कम खाना खाते हो और वैसे भी कम खाना खाता हूँ, और जब दिल टूटता है तो मैं खाने के बारे में सोचता ही नहीं हूँ. जब कभी आप सैड होते हो या कभी आप बहुत हैप्पी होते हो तब आप क्या? Ice cream sounds nice, especially when I'm happy. Or like, a kind of a cheat snack or whatever, ice cream. और ऐसे सैड में भी जब सैड I think अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ कि यार कुछ खराब हो गया, पिक्चर जो मिलने वाली थी वो नहीं मिली या something like that happens. Yeah, I think ice cream is a nice way to soothe that pain. And what is that one thing you really love having when you're on the set of a movie? मैं बड़ा लाइट खाना खाता हूँ सेट पे. Sushi is something I eat, salads I eat a lot of, fruits I eat a lot of, dry fruits I eat a lot of. I like to keep anyway, as you said, मैं कम खाता हूँ, but set पे खास तौर पे because I want to stay light. I don't want to feel heavy on set. Talking about your work, Akshay, what's next for you? What are you working on? So I did a lot of work last year. So all of that will come out now. So there's a show I do called Illegal. उसका तीसरा सीजन आ रहा है. There's a show called Broken News जिसपे जयदीप पलावत, श्रेया पिलगांवकर, सोनाली बेंद्रे, उसका पहला सीजन आ चुका है. सेकंड सीजन मेरी एंट्री होती है. Then ऐसे 3-4 फिल्में हैं. There is Dile Grey with Susi Ganesan. That's a Tamil remake in Hindi. There's Varchaswa with Ravi Kishan जो बिहार के कोल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है. Then there is a film called तू चाहिए that Ratna Sinha directed, जिन्होंने शादी में सुरुराना बनाई थी.
with Rajkumar Rao, if you remember. It was a nice film. So that's for Z. And then there is another film that I'm forgetting. देखो इतना काम कर ले मैं touchwood भूल रहा. 2014 with Jackie Shroff. Yeah. So there's all this. अभी वो actually मैंने अभी पिछले हफ्ते खत्म की है. We had our last schedule in Bhuj, and I think I have 2 days left in Bombay soon. So that film will be wrapped. So all these have to release, and I was waiting for Fighter before taking on the next thing. But अब मन थोड़ा खाली हो गया. So I think very soon I'll be getting back to work. And any Bollywood, dabba which you have had, which you would really like to have again? Bollywood dabba, like खाने. Bollywood actor का dabba. Oh, like that. Yeah. Yeah, I'm sure there's a lot. यार संजय मिश्रा, वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. क्या मटन बनाते हैं यार. ओ हो. तो उनका डब्बा तो वो खुद बनाते हैं. It's not like a chef makes it. वो रात को अपना खाना बनाते हैं, पैक करते हैं सब कुछ. सुबह को कोई गरम कर लेता है उनके लिए. टिफिन पैक होता है उनका. And he loves sharing. Yeah. So you come on set and वो बोलेगा बेटा ये खा, बेटा वो खा, मजे ले लाइफ के. But he's a damn good chef. Damn good chef. But as we talk about food, I would want you to enjoy food, and it was lovely chatting with you Always, on a lot of always. food things. So Always. having him more after Street Food Diaries and with the food. So let's Yes. enjoy. Hi, this is Akshay Oberoi, and watch my exclusive Street Food Diaries with Samira on Zoom.